Now, a 40-year-old government employee was shot dead by unidentified gunmen in the Rajouri sector of Jammu and Kashmir. This happened on Monday. The victim, identified as Mohammad Razak, was fatally shot soon after stepping out of the mosque in the Sadra Sharif area. He was then rushed to the nearby hospital. He was declared brought dead. Razak's brother reportedly served in the Territorial Army. Less than a week ago, a migrant worker from Bihar was fatally shot by terrorists. This happened in the Anantnag district of South Kashmir. On April the 8th, terrorists had previously shot and injured a non-local tourist cab driver, this in the Shopia district again of South Kashmir. And Times Now has tracked all these stories. We've also, got you details of what has happened as far as the security apparatus is concerned. Our colleague Pradeep is weaving together what has happened in the last few weeks in Jammu and Kashmir. In yet another case of targeted killing, 40-year-old man identified as Razak Mohammed was targeted by terrorists here in Kunda village in Sadra Sharif of Rajouri district. Yesterday evening, when Razak, an employee in social welfare department, when he came out of mosque after offering prayer, that was the time when terrorists opened fire. He was shifted to hospital where he's come to his injury. Soon after that, coordinated search operation was launched. And right now also you can see the security force personnel, army personnel and police personnel. They are deployed at several points. They are trying to nab the terrorists responsible for this gruesome act. He's the second civilian to be targeted during the last 1 week. We saw that few days back, one vendor from Bihar area, he was targeted in Bij Bihara in South Kashmir. This clearly indicates that there are certain elements who are trying to scuttle democratic process and they cannot see peace and prosperity in this region. We have seen that during the last phase of election, there was more than 70% of polling, and that seems to have rattled Pakistan and Pak proxies. In the past also, there had been several incidents where the terror-related elements had been trying to scuttle and destabilize peace, especially in twin border district of Poonch and Rajouri. But during the last few weeks, there was almost peace in this region. Once again, they are trying to generate fear psychosis so that people should not come out for voting. And Times Now has also exclusively spoken to the former DGP Dilbagh Singh to know how Kashmir has evolved post the abrogation of Article 370. Listen in to what he says. फ्रॉम डे वन अगर हमने देखा कि उस वक़्त का जो सबसे बड़े लीडर हैं, अगर उसने भी खुराफात करने की और पब्लिक के सेंटीमेंट को विप अप करने की कोशिश करी, तो हमने वो सख्ती दिखाई जिसकी मिसाल शायद पहले मिलती नहीं और आगे शायद मिले ना। वो सख्ती इसीलिए करी थी कि आम आदमी जो है उसको मिसलीड करते करते इन लोगों ने जहाँ पर दशकों निकाल दिया, बहुत सारे साल इन्होंने मिसलीड किया। अगर आज फिर इनको मौका मिला 370 को लेके मिसलीड करने का, तो शायद ये इस हद तक मिसलीड कर देंगे कि हमारा समझाना, हमारा बुझाना, हमारा बताना बेमाने हो जाएगा। इसलिए वो एलिमेंट जो किसी भी तरह का खुराफात कर सकता था, चाहे वो उस वक़्त का चीफ मिनिस्टर का लेवल हो, चाहे कोई उसके आसपास कोई भी लेवल हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे बाकी लीडर हों, उनको जो सख्ती की ज़रूरत थी, वो वक़्त की ज़रूरत थी। इनके अंडर काम किया आपने, चाहे हम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से फारूक अब्दुल्ला के अंडर काम किया है, महबूबा मुफ्ती के टाइम भी, उमर अब्दुल्ला के टाइम, एक पल के लिए आपको लगा कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर है, आज में इनको डिटेन कर रहे हैं हम, तो क्या उस समय आपके मन में चल रहा था? देखिए, हम लोग अपने एक्शन में डिसेंट थे। हम लोगों को किसी के साथ, जैसे मैंने कहा, कि कोई रंजिश नहीं थी। हमें ये था कि हालात कैसे संभालने हैं, हालात कैसे सुधारने हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब को तब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था जब तक वो बगल के होटल में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सेंटीमेंट को विप अप करने के लिए नहीं पहुंचे थे। तब तक इंतजार किया गया। पहली ही रात को जब गुपकार रोड के ऊपर बड़े बड़े लीडरों ने निकल करके मीडिया के आगे नाचना शुरू किया, तो हमारे लिए सिग्नल था कि ये आज का नाचना कल के एक बड़े ड्रामे में तब्दील हो सकता है। मैन्युफैक्चर कर रहे थे, बात की बताने की कोशिश कर रहे थे कि तो कश्मीरी खिलाफ है, बेसिकली वही करने की कोशिश हो रहा था। लोग कह रहे थे कि हम कर्फ्यू लगा रहे हैं, ऐसा नहीं था। दहशतगर्द कर्फ्यू लगा रहा था और हम कर्फ्यू खुलवा रहे थे।
वो दहशतगर्द अपना टेरर ग्राउंड के ऊपर बताना चाहता था कि हम आपकी जिंदगी नहीं चलने देंगे, आप इस फैसले के साथ अगर खड़े होंगे, हाँ घर बंद करो, दुकानें बंद करो, स्कूल बंद करो, सड़कों पे आओ, पाकिस्तान की साजिश में शरीक हो जाओ, तब हम आपको इजाजत देंगे सब कुछ करने की। जब तक वो नहीं करोगे तब तक हम आपको उठने नहीं देंगे। कितने लोगों के ऊपर गोली चली, दुकानदार को मार दिया बटमालू के अंदर बेचारे को। आज भी मुझे उसका दुख होता है जब मैं उसका नाम देखता हूँ। सोपुर की फ्रूट मंडी में जाकर के, फ्रूट मंडी के वाले के घर पे जाकर के किया, उसकी 7 साल की पोती को गोली मारी। कितने लोग, कितनी गाड़ियां सड़क पे चलती हुई इन्होंने जला दी कि आपने कैसे, सिविल कर्फ्यू में गाड़ी निकालने की जरूरत कैसे हुई, हॉस्पिटल में नहीं लोगों को जाने देते थे। 6 महीने लगे हमें लोगों को ये भरोसा देने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल पूछता हूं, क्योंकि हम जब से आप हैं कई दशक से आपने सुना कि 370 को हटाया नहीं जा सकता, बहुत दलीलें दी जाती थी कि ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। कभी आपको लगता था कि 370 वाकई में हट सकेगा? कि आज भी आप अचंभा होता है आपको कि ये कर दिया हमने कार्य? इसके लिए तो देखिए, जितना ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप को सलाम करें उतना ही कम है। ये एक नसूर था 370, ये एक ऐसा नसूर था जो मतलब सदियों तक भी इसकी अगर मर्म लगाते रहे तो भरपाई नहीं होती। और ये एक ऐसा दाव था, एक ऐसा खेल था जो हमारे लोग खेलने में मास्टर हो गए थे। Now, a 40-year-old government employee was shot dead by unidentified gunmen in the Rajouri sector of Jammu and Kashmir. This happened on Monday. The victim, identified as Mohammad Razak, was fatally shot soon after stepping out of the mosque in the Sadra Sharif area. He was then rushed to the nearby hospital. He was declared brought dead. Razak's brother reportedly served in the territorial army. Less than a week ago, a migrant worker from Bihar was fatally shot by terrorists. This happened in the Anantnag district of South Kashmir. On April the 8th, terrorists had previously shot and injured a non-local tourist cab driver, this in the Shopia district again of South Kashmir. And Times now has tracked all these stories. We've also, remember, got you details of what has happened as far as the security apparatus is concerned. Our colleague Pradeep is weaving together what has happened in the last few weeks in Jammu and Kashmir. In yet another case of targeted killing, 40-year-old man identified as Razak Mohammed was targeted by terrorists here in Kunda village in Shadra Sharif of Rajouri district. Yesterday evening, when Razak, an employee in social welfare department, when he came out of mosque after offering prayer, that was the time when terrorists opened fire. He was shifted to hospital where he's come to his injury. Soon after that, coordinated search operation was launched. And right now also you can see the security force personnel, army personnel and police personnel. They are deployed at several points. They are trying to nab the terrorists responsible for this gruesome act. He's the second civilian to be targeted during the last 1 week. We saw that few days back, one vendor from Bihar area, he was targeted in Bijbihara in South Kashmir. This clearly indicates that there are certain elements who are trying to scuttle democratic process, and they cannot see peace and prosperity in this region. We have seen that during the last phase of election, there was more than 70% of polling, and that seems to have rattled Pakistan and Pak proxies. In the past also, there had been several incidents where the terror-related elements had been trying to scuttle and destabilize peace, especially in twin border district of Poonch and Rajouri. But during the last few weeks, there was almost peace in this region. Once again, they are trying to generate fear psychosis so that people should not come out for voting. Kane, sir, your dinner. On a tile? It's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।